Microeconomics Chapter 1 Introduction Economics. It is the study of mankind. It is a science which deals with wealth maximization. अगर कोई इंसान अपने जीवन यापन के लिए कुछ कमाता है तो वे इकोनॉमिक्स है। Microeconomics. It is the study of individual unit, for example individual seller, individual producer and individual firm. माइक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब है किसी भी चीज का इकाइयों में अध्ययन, और हम कह सकते हैं कि प्रति इकाई अध्ययन माइक्रो इकोनॉमिक्स कहलाता है। Macroeconomics. It is the study of economy as a whole in one unit. मैक्रो इकोनॉमिक के अंदर पूरी इकोनॉमिक्स एक साथ अध्ययन की जाती है। Types of economy. 1. Capitalist economy. Market economy. In market economy, all the material means of production, sales and distribution of goods are in the hands of private person and profit is the main motive here. उत्पादन, हस्तांतरण और बेचना इत्यादि निर्णय एक प्राइवेट पर्सन के द्वारा लिए जाते हैं। 2. Socialist economy. Planned economy. In this type of economy, all the material means of production and selling and distribution are in the hands of centrally planned authority, and here is welfare motive of government. प्लान इकोनॉमी के अंदर उत्पादन, हस्तांतरण और बेचना इन सभी का निर्णय सरकार के द्वारा दिया जाता है। 3. Mixed economy. It is a mixture of capitalist economy and socialist economy. Here both type of economy are available in some proportion. मिश्रित अर्थव्यवस्था, इसमें दोनों प्रकार की अर्थव्यवस्थाएं पाई जाती है, पूंजीवादी और समाजवादी। Economic problem. It is a problem of choices. We have limited resources and their uses are unlimited or alternative uses. चयन की समस्या को इकोनॉमिक प्रॉब्लम को आ जाता है। इसके अंतर्गत हमारे पास रिसोर्सेज लिमिटेड है और उनके इस्तेमाल अनगिनत है।